So this session we are going to deal with the next topic, that is the redox reactions. Now we very well know, we have studied in previous classes that redox is actually comprising of two words. It's a portmanteau of two words, that is reduction and oxidation. The first, discussing what reduction process is. It is the loss of oxygen. As you have done before in previous classes, we can generalize this as loss of oxygen or any electronegative element. Okay. It can also be said as gain of hydrogen. This part you have done previously. We're going to generalize this to what? Gain of hydrogen or any electropositive element. Because in every reaction we cannot have hydrogen and oxygen only. There might be different elements which are electropositive or electronegative. So we can generalize the definition this way. And in third terms, reduction is what? Gain of electrons. So I'll revise this once. Loss of oxygen or any electronegative element, gain of hydrogen or any electropositive element, and gain of electrons. These are the compiled, you can say, definitions of reduction process. Reduction process can be identified by any of these three methods. Okay. Then going to oxidation, which is exactly opposite of reduction process. It is the gain of oxygen or any electronegative element. It is the removal of hydrogen or any electropositive element. And it is also defined as the loss of electrons. Means if any species is losing electrons, we can say that oxidation is taking place, that species is getting oxidized. Similarly, if any species is gaining electrons, we can say that species is getting reduced. Okay. Now to deal with these things in more detail, here are some examples, some very simple examples. Hydrogen combines with oxygen to give me water. Now, if I simply compare hydrogen on left hand side and hydrogen on right hand side. So right hand side, hydrogen is actually combined with oxygen giving me water. So on going from LHS to RHS, I can say hydrogen has gained oxygen. So this process is oxidation. And oxygen from LHS to RHS has gained hydrogen. So if you're gaining hydrogen or any electropositive species, that process is reduction. So hydrogen here is getting oxidized, while oxygen here is getting reduced. Now picking up another example where we don't have hydrogen, oxygen. First we'll tell a little bit about these elements. This is magnesium. Magnesium is a metal, hence its nature is electropositive. S is my sulfur. We very well know sulfur is a non-metal. Non-metal has a electronegative nature. So if you need to generalize this thing, we can say metals have electropositive nature, non-metals have electronegative nature. Okay. So now if I compare magnesium on left hand side to MgS on right hand side, I can say magnesium has gained sulfur, which is an electronegative atom. So this process is oxidation. Similarly, sulfur on LHS has gained magnesium and MgS. So if you are gaining an electropositive atom, the process is reduction. So magnesium is getting oxidized to MgS. Sulfur is getting reduced to MgS. That is magnesium sulfide. One more example. Sodium on LHS has gained oxygen while forming NaCl. So I can say sodium is oxidized to NaCl. While chlorine has gained sodium, यहाँ left hand side पे chlorine सिर्फ Cl2 था. RHS में chlorine के साथ I am having sodium. So chlorine has gained sodium. Chlorine के पास sodium आ गया है. So this process is reduction. I can say chlorine is getting reduced to NaCl. Now one very important thing to note, that reduction and oxidation, they always take place simultaneously. Means if any species is getting oxidized, another species is definitely going to get reduced. I mean, it might happen that there are two species which are getting oxidized or one which is getting reduced if there are three reactants. But the only important thing is that if there is loss of electrons,
definitely kahin na kahin there would be gain of electrons also, है ना? So these two processes, they always take place simultaneously. There is no reaction which is only oxidation or only reduction. You will always have redox, means reduction and oxidation taking place simultaneously. The next, how to identify if any reaction is given to me, is it is redox or not? And how to identify if this reaction here is a redox reaction or it's a simple chemical reaction, how to differentiate or how to categorize them. For that, we have to check the change in the oxidation numbers, oxidation state, or if I put in a more general term, the change in the charges. So now what is the concept of this oxidation number and oxidation states and how to calculate them? That is what we are going to deal in next. Oxidation numbers or oxidation states generally could be said that when the atoms are present in covalent bond formation, you know, they share electrons, right? Sharing से ही क्या बनता है आपका covalent bond. So because of that sharing, जो charges आते हैं इन atoms के ऊपर, they could be said as their oxidation states or oxidation number. Now, just for now, for the initial stages, we are going to consider oxidation state and oxidation number as same. Although there is a difference between them, abhi starting ke liye we are going to take them as same, है ना? So I'm going to abbreviate oxidation number as ON and oxidation state as OS. So first of all, in the elemental form, either the elemental form is in atomic form or it is a molecular form, the oxidation number assigned is always 0. Matlab I take C, Fe, these are all atoms, right? Sodium, P4. Now P4, S8 are molecules, but these are all elemental forms. Why elemental forms? They are made up of the same element. Elemental form ka matlab they are made up of the same element. So the oxidation number here is always 0. इसमें we can have more examples also. O2, N2, Cl2, F2, है ना? तो जितने भी ये gases हैं, diatomic gases हमारे हो गए. या अगर आप monoatomic की बात करो तो आपके कौन से हो गए? Noble gases, helium, neon, argon. तो ये सारे जितने elemental forms है अपने elemental form में exist करते हैं, the oxidation number is assigned as 0. Then for your monoatomic ions means ions consisting of only one atom, like chloride, bromide, iodide, sulfide, magnesium, sodium, Al3 plus, aluminium ion. So their charges and oxidation number are same. Means chloride का charge -1 है, तो वो -1 charge भी है और oxidation number भी है. Similarly, I pick up any monoatomic cation like magnesium. तो magnesium का charge is 2 plus, so इसका oxidation number is also 2 plus. Similarly, if I have Al3 plus, तो उसका oxidation number and charge is +3. This is for the case of monoatomic ions. Then in my periodic table, my group 1 and group 2 elements. अब group 1 कौन से होते हैं मेरे elements? My alkali metals, है ना? And group 2 is my alkaline earth metals, if you remember. तो जो इनका elemental form है वो तो किसी का भी हो, that is taken to be 0. But ionic form में जो इनका value होता है, that is either +1 or +2, which is fixed. Okay, देखो जैसे देखो पूरा group 1, all the members have कौन सा charge? +1. तो ये +1 इनका charge भी है और oxidation state भी है. And the best part is कि ये change नहीं होगा. For group 1 and group 2 दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो अपने कौन से फॉर्म में रहेंगे? एलिमेंटल फॉर्म में, और अगर वो आयनिक फॉर्म में आ भी रहे हैं, इफ दे आर फॉर्मिंग कंपाउंड्स एंड दे हैव अटेन्ड एन आयनिक फॉर्म, तो ग्रुप 1 के लिए दैट वैल्यू इज फिक्स्ड एज +1 ओनली. मतलब इफ आई सिंपली से दैट सोडियम हियर इज +1, है ना, इट कैन नॉट एक्वायर एनी अदर चार्ज. सो सोडियम कैन बी ईदर 0 और इट कैन बी +1. सिमिलरली मैग्नीशियम कैन बी 0 और इट कैन बी +2. अब ये पूरा ग्रुप 2 is going to have the same oxidation number or charge, that is +2, and it is not going to change. कैल्शियम ले लो, कैल्शियम एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा, कैल्शियम इज 0, बट आयनिक फॉर्म में जब कैल्शियम एज अ कैटायन आएगा, इट विल ऑलवेज बी Ca2+.
Calcium cannot acquire any other charge. It cannot be 1 plus, it cannot be 3 plus. Calcium is always going to be 2 plus. So for these 10 ions that are written here, 5 from group 1 and 5 from group 2. In 10 ions के लिए their ionic phases, their ionic charges या उनके oxidation numbers are fixed. होंगे तो यही होंगे, नहीं तो और कोई नहीं हो सकता. हाँ, elemental form में इनको दोगे, atomic form में, elemental form में लोगे, then definitely they are 0. So it is either 0 or +1, or if for group 2 it is 0 or +2. Then now for hydrogen, we take the oxidation number or state to be +1, है ना? जैसे हमने बोला, elemental form of hydrogen is H2, है ना? Hydrogen exists as hydrogen gas. So ये इसका elemental form है. Elemental form basically होता है how that species is existing in nature, है ना? Hydrogen is existing as H2. So the oxidation number assigned in H2 is 0. But normal कहीं भी और आप hydrogen देखोगे covalent bond में. So the oxidation number is always +1. Okay. Now there is only one exception to this rule when hydrogen forms a bond with the metal. Such type of compounds like sodium NaH, MgH2, this is sodium hydride or magnesium hydride. So when this hydrogen is present with a metal, in such type of examples only, this is one case where only hydrogen is taken to be -1. So hydrogen is -1, the oxidation number will be -1 only and only when hydrogen is present with a metal. Rest all cases, hydrogen is always +1. Hydrogen is always written as +1. Now देखो next, similarly for oxygen. Why oxygen? Generally, maximum cases, it exists as oxide ion, है ना? So the charge here or the oxidation number here or the oxidation state here is taken to be what? -2. Okay. Oxygen का elemental form, oxygen कैसे exist करता है? As oxygen gas, तो O2 molecule, O2 form में तो हम value क्या लेंगे? Elemental form में it is 0. But when I am talking of oxygen in the ionic form, okay, एक तो हो गया क्या? Oxide. Second form is peroxide. So इस peroxide का formula क्या है? It is O2 2-. So each oxygen here is in कौन सा state? -1. Similarly, if oxygen is existing as a superoxide ion, this is O2 -1. For 2 oxygens it is -1 charge. Then for each oxygen कितना हो जाएगा? -half. So you know what we are calculating here is for each oxygen atom. So oxidation, so your oxidation number of oxygen can be either -2. अगर oxide form है, it can be -1 peroxide form में, it can be -half in superoxide form. Okay. But there are some examples where oxygen can be positive also, although it is quite electronegative, but only when oxygen is bonded to fluorine. क्योंकि ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन. तो ओनली व्हेन ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन, इसका स्टेट क्या हो जाता है? पॉजिटिव. देखो, लाइक इन OF2 ऑक्सीजन इज +2, इन O2F2 ऑक्सीजन इज +1. वी विल टीच यू हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस +1 एंड +2, है ना? बट नॉनदलेस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा स्टेट आ रहा है? पॉजिटिव. सो दिस विल ओनली बी पॉसिबल व्हेन ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन. रेस्ट ऑल केसेस, इन 3 में से कोई एक सिचुएशन होगा, इन 3 में से, ठीक है? उसमें भी मैक्सिमम केसेस में कौन सा होगा? ये वाला, दैट इज द ऑक्साइड. Now then for halogens, we have fluorine, chlorine, bromine and iodine. Now fluorine is the most electronegative element in the whole periodic table. इसका value तो is -1 always, except for one example, that is HOF, where fluorine is considered as +1. Rest all cases, fluorine is taken to be -1.
मतलब बेसिकली वी आर कंसिडरिंग फ्लोरीन एज फ्लोराइड आयन, है ना. इट इज गोइंग टू बी -1 ऑलवेज. Now the next, talking for chlorine, bromine and iodine, the rest three halogens, the oxidation number can vary from -1 to +7, है ना. ये वेरिएशन फ्लोरीन में नहीं आता, फ्लोरीन इज ओनली -1. और ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म आप लोगे, फ्लोरीन का एलिमेंटल फॉर्म इज F2. इन दैट केस इट इज 0. बट जब भी ये आयनिक फॉर्म में आएगा या बॉन्डेड फॉर्म में आएगा, कोवलेंट बॉन्ड में आएगा किसी और कंपाउंड के साथ, ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट इज ऑलवेज -1. ठीक है. अब ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, व्हेन दे आर प्रेजेंट विद ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो दे हैव पॉजिटिव स्टेट्स. क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. So when chlorine, bromine, iodine are present with oxygen or fluorine and covalent bonds, so what happens is oxygen fluorine का nature is more negative, तो इनके ऊपर चार्ज भी क्या आता है? नेगेटिव. So by default these chlorine, bromine, iodine have to acquire positive states. But if this chlorine, bromine, iodine is present with any other metal or non-metal in the periodic table, so इनका oxidation number is taken to be -1. Just a recap of what we have done before. You can see some examples are written there. Now next we are going to discuss how to calculate these oxidation states and numbers, and what is actually this oxidation state and numbers, and what is the difference between them, है ना. Now there are two ways to calculate states and numbers. One is via the formula, using the formula. The other one is via their structures. Using structures also you can calculate oxidation states. Okay, aja. Now one thing we should categorize here, that when you are using the formula to calculate, so what you are actually going to end up, or what you are actually going to calculate, is the oxidation number. Say देखो, I have Na2S2O3. This compound is sodium thiosulfate. Now I need to calculate the oxidation state या oxidation number of sulfur here, है ना. So this sulfur, जिसकी भी आपने oxidation number calculate करना है, take it as X. So if one sulfur is X, for two sulfurs total value कितना आ गया मेरे पास? 2X. Now I'm going to add सारे atoms का contribution. Sodium we very well know it is group 1 element, तो इसका क्या state है? +1. But since there are two sodium involved, there are two atoms of sodium involved, state कितना हो गया? 2. For sulfur it is 2X. Now if we go to oxygens, you can see here there are 3 oxygen atoms and each oxygen पे charge कितना होता है? -2. And notice ये पूरा molecule is what? Neutral. So sodium का contribution, sulfur का contribution and oxygen का contribution total is equal to what? Net charge, that is 0. अगर सपोज यहाँ कोई नेट चार्ज होता, कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो हम उसके इक्वल कर देते. कुछ नहीं लिखा मतलब इट इज 0. So now if I solve for X, what I get is 2. This is my oxidation number, है ना. अब how to calculate यहाँ पे oxidation state इसी species का, look at the right hand side. This is the structure of sodium thiosulfate. ठीक है. अब कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ क्या करना है, ये देखो, जैसे यहाँ पे there are 2 types of bonds if you can see, है ना. Sulfur is present with oxygen or either sulfur is present with sulfur. So if I take sulfur present with oxygen, मेरा oxygen is more electronegative. और देखो ना, there is one covalent bond. Sulfur is forming one covalent bond with oxygen. So oxygen becomes -1 and sulfur becomes +1. Okay. Now the same thing, ये देखो ये वाला thing, I can apply it here. Sulfur is bonded to oxygen here. So sulfur is +1, oxygen is -1. ये देखो यहाँ पे भी sulfur is +1, oxygen is -1. अच्छा, अब मैं ऊपर वाला बॉन्ड देखो जो हमने बिल्कुल टॉप की तरफ बनाया. Now here sulfur is present with oxygen in a double bond. Now since there are 2 covalent bonds, तो हम क्या कर देंगे? +2 and -2. 3 covalent bond होते, I would have done +3 and -3, है ना. Now since oxygen is more electronegative,
ऑक्सीजन बिकम्स -2, सल्फर बिकम्स +2. सो अगर मैं ये सल्फर पे अच्छा अभी देखो, इधर भी देखो, हियर सल्फर इज फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड विद सल्फर. अब जब सल्फर इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद सल्फर, अब चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, राइट? जितना लेफ्ट वाला सल्फर पुल करेगा उतना राइट वाला सल्फर पुल करेगा. तो व्हाट हैपन, व्हाट इज द नेट आउटकम इज कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैल्यू क्या हो जाता है? 0, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? बीच में. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो सिंपली यू कैन लर्न, इफ यू हैव अ कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन सेम टाइप ऑफ एटम्स, सल्फर सल्फर, कार्बन कार्बन, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, उसका स्टेट इज ऑलवेज टेकन टू बी 0. सो इफ इन दिस बॉन्ड आई कंसिडर द कंट्रीब्यूशन, इट इज ओनली 0 0, है ना? तो ये वाला सल्फर पे तो वैल्यू कितना आ गया? 0. इस सल्फर के लिए आई कैन add all the contributions, so what I get is +4. तो जो मेरे सल्फर को मैं अगर अब लिखूं, नोट करूं अलग से, मेरा एक सल्फर इज इन +4 स्टेट, एक सल्फर इज इन 0 स्टेट. So this +4 and 0 that you have calculated via the structures are the oxidation states. Okay? और इन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट्स का अगर मैं एवरेज निकाल लूं तो I get my oxidation number. Now how do we calculate the average? Total charge upon total number of atoms. Total charge here is what? 4 and 0, that is 4. Number of sulfur atoms in the molecule is 2. So 4 by 2 करोगे, you get 2, which you have calculated here. So it is not a very different thing. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो आप x करके निकालते हो, I'll put it in a nutshell, जो आप x करके ऐसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हो, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर. और ये एवरेज वैल्यू आती है, क्यों? क्योंकि आपने हर एक सल्फर को क्या कंसिडर करा है? एज x, है ना? वी डिड नॉट टेक सल्फर एज x एंड y. हमें नहीं पता एक स्टेट है, 2 स्टेट है, हमने सल्फर को क्या कंसिडर कर लिया? x. तो ऑब्वियसली वो सारे सल्फर्स का क्या आ जाता है आपके पास यहाँ पे? एवरेज. और जब आप स्ट्रक्चर देखते हो, स्ट्रक्चर देख के जो इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हो, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. That is the oxidation state. So here one sulfur is +4, another sulfur is not plus, it is simply 0. Okay, as we'll discuss more examples to get this concept more clear. पहले हम ये वाला केस करते हैं, then we'll, अच्छा पहले चलो इधर ही आओ. अब ये देखो, जैसे ये है case of HCN and HNC. These are 2 molecules, hydrogen cyanide and hydrogen isocyanide. Now why I have picked up them? Because इसमें hydrogen isocyanide में there is formation of a coordinate bond. There is formation of a coordinate bond. तो जब coordinate bond बनता है, there is one extra step which is to be done. ठीक है? अब पहले हम लेफ्ट वाला मॉलिक्यूल करते हैं, इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, दिस इज नॉर्मल केस. ठीक है? नाउ HCN का स्ट्रक्चर इज देयर. ये देखो, दिस फर्स्ट येलो वाला बॉन्ड, दिस इज द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन. अब जो हमने रूल्स लिखे थे, हमने क्या बोला था? टेक हाइड्रोजन एज +1 and the other element as -1. Hydrogen is always taken +1 except for when it is present with a metal. तो यहाँ तो कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन इज टेकन +1 और ये एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो कार्बन कितना हो गया? -1. सो आई कलर कोडेड दिस बॉन्ड का कैलकुलेशन इन येलो. ये देखो, येलो वाली बॉन्ड की वैल्यूज ये है. Now let's come to this triple bond here that I have coded in green. Now you C और N. देखो, there is a triple bond formation. Nitrogen is more electronegative. तो 3 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन इज मोर नेगेटिव, so this becomes -3 and carbon here becomes +3. अब कार्बन पे नेट चार्ज कितना आ जाएगा? नेट वैल्यू कितना आ जाएगा स्टेट का? -1 + 3 ऐड करोगे, यू गेट +2. So the oxidation state of hydrogen here is +1, carbon is +2 and nitrogen is -3. This was the normal wala case. Now come here to H and C. H और N के बीच में again the same thing. Hydrogen is +1, nitrogen is -1. Now here the bond is between nitrogen and carbon. Now since अभी we did nitrogen is more electronegative, तो हमने नाइट्रोजन कर दिया -3 एंड कार्बन कर दिया +3. मतलब अभी स्टार्टिंग वाले केस में अब आपका बॉन्ड कोऑर्डिनेट हो या कोवेलेंट हो,
treat it as a normal covalent bond only. After all, coordinate bond is a type of covalent bond only. तो हमने एक क्या कर दिया इसको, जैसे हम नॉर्मल करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए +3 एंड -3. ठीक है. अब यहाँ जो एक्स्ट्रा स्टेप होता है वो क्या होता है कि वंस यू हैव डन द कोवेलेंट बॉन्ड वाला कॉन्ट्रीब्यूशन, तो बिकॉज ऑफ दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, इसका एरो देख लो कहाँ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, तो जिस एटम की तरफ जा रहा है इसके लिए पुट एन एक्स्ट्रा -1 एंड दूसरे हेड पे क्या हो जाएगा +1. तो यहाँ देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज गोइंग फ्रॉम एन टूवर्ड्स सी, है ना, एन से सी की तरफ. तो एक एक्स्ट्रा देखो जो पिंक में है रिटन -1 एंड +1. अब ये सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, यू विल गेट द नेट oxidation states of hydrogen, nitrogen and carbon. And notice in both the examples the states are not changing, it is same. ऐसे ही next example, peroxy nitric acid. Now इसमें again ये देखो we have a coordinate bond here and we have a peroxide linkage here. ठीक है. पहले I'll discuss how we caught, I mean अगर किसी को नहीं पता हो कि ये peroxy nitric acid है, simply give you HNO4. तो ये देखो हम तो नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे x लेके, है ना, 1 + x + 4 times of -2 is equal to 0. Now my x comes out to be +7, है ना, जो बहुत ही वैलिड लगता है. बट इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल सिंस नाइट्रोजन हैज ओनली 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. तो उसके पास जब है ही 5 तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे देगा? इट कैन नॉट गिव 7 इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग, राइट? नाइट्रोजन का वैलेंस शेल इज ओनली हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 5. तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम स्टेट दैट कैन गो इज +5 ओनली. बट नाइट्रोजन हियर इज कमिंग आउट टू बी +7, ज्यादा आ रहा है देन assumed value, because what we are doing here is we are considering all the 4 oxygens as -2, है ना. यहाँ पे चारों ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं है. So if I go at the structure I see here, can you see this O single bond O? 2 oxygens are present as peroxides. Okay. तो आप कैसे निकालें स्ट्रक्चर देख के? देखो N is doubly bonded to oxygen, ऑक्सीजन हो गया -2, नाइट्रोजन हो गया +2. अब ये वाला बॉन्ड देखो, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन -1, नाइट्रोजन +1. ये भी सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन +1, ऑक्सीजन -1, है ना. और हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला एक्स्ट्रा स्टेप देखो, एरो कैसे जा रहा है, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, तो एक एक्स्ट्रा +1 एंड एक एक्स्ट्रा -1. तो मैं सारी वैल्यूज को ऐड कर दूं, नाइट्रोजन कम्स आउट टू बी +5. Some more examples where you can compare the oxidation states and oxidation number. The oxidation number is coming out to be the average of the oxidation states. और ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ऑक्सीडेशन नंबर में जो ये डिफरेंस आता है वैल्यूज में, ये कब होगा? व्हेन यू हैव sorry, more than one atoms present in more than one state and more than one number. जैसे यहाँ देखो, in first case I am having 4 sulfur atoms, है ना. So जब भी more than one atom is present, तो there might be a chance कि आपका state and number is different. ऐसे देखो, there are 3 bromines here, so the oxidation state and number here is different. कभी भी एक एटम होता है, for a single atom the state and number is always same. थोड़ा सा ये ऊपर कर देती हूँ, this is visible. This is tetrathionate ion and tribromine octaoxide, Br3O8, simply bromine octaoxide. BrF5, यहाँ देखो I'm having only one bromine as the central atom, only one bromine, है ना. तो इसका जो वैल्यू आ रहा है +5, that is my oxidation state as well as the oxidation number. ये देखो, look at the structure of BrF5 here. Now don't worry about the structures, we'll teach you how to draw the structures in chemical bonding. But considering this structure, ये देखो, if I look at each Br, bromine and fluorine bond, हमने क्या बोला था, याद करो, bromine is an halogen,
बट व्हेन ब्रोमीन इज प्रेजेंट विद फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इनके कौन से स्टेट्स आ सकते हैं? पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये आपने क्या कर दिया? -1। यहाँ इस बॉन्ड के लिए ब्रोमीन क्या हो गया? +1। सो इस बॉन्ड के लिए भी ब्रोमीन इज +1, इस बॉन्ड के लिए ब्रोमीन इज +1 +1 +1, टोटल ब्रोमीन कितना आ गया? +5। सो दैट यू हैव कैलकुलेटेड हियर आल्सो। तो यहाँ से जो आपने नंबर कैलकुलेट किया वो भी 5 आ रहा है, जो स्टेट कैलकुलेट किया वो भी 5 आ रहा है ना। फॉर अ सिंगल एटम इफ इट इज प्रेजेंट, हमारा स्टेट एंड नंबर कम्स आउट टू बी सेम। ठीक है, देन दिस इज द परक्लोरेट आयन। तो देखो क्लोरीन हियर इज प्रेजेंट विद ऑक्सीजन, so chlorine is going to have a positive state. Okay, so here one difference between oxidation state number, formal charge and charge. Don't worry, we'll do the concept of formal charge in chemical bonding. So we can leave this example till then. Now, so coming back to where we were identifying the redox reaction. So whenever in a reaction, there is a change in the oxidation number or oxidation state, the reaction on going from reactant side to product side, means when you are going from LHS to RHS, if there is a change in the oxidation number or oxidation state, then the reaction is said to be a redox reaction. If there is no change, then it is a simple chemical reaction, है ना? जैसे we give you the example of NaOH plus HCl, NaCl plus water, है ना? This is a very common neutralization reaction. So if you consider the states here, the oxidation states now, which you have calculated, which you have learned how to calculate using structure or taking them as X. यहाँ पे आपके states जो आ रहे हैं, they are same. Sodium here is +1, here sodium is +1. Cl is -1, here Cl is -1. So this reaction, where there is no change, this reaction does not belong to the category of redox, since there is no change in oxidation state on going from reactant side to the product side. Some more examples here. Calcium carbonate decomposing to give calcium oxide and CO2. Again, there is no change in the state, so it is not a redox reaction. Now in the second reaction here, sulfur here is +4, X करके आप calculate कर सकते हो. ऐसे देखो, chromium here is coming out to be +6. On the RHS, chromium is +3 and sulfur is +6. So sulfur is +4 on LHS and +6 on RHS. Chromium on LHS is +6, chromium on RHS is +3. Now यहाँ पे there is a change in the oxidation numbers, so this reaction is a redox reaction. So this is the first thing. Calculate the oxidation state or numbers. Anyway, structure is given to you. Structure से निकालो, नहीं है तो X करके आप निकाल सकते हो, है ना? Whatever you calculate, state or number, and if there is a change in the state or number, then the reaction is a redox reaction. Now, how to identify how to identify the oxidation and the reduction process? If you remember, oxidation reduction is also categorized in terms of gain or loss of electrons. So what you can simply do is, agar on going from LHS to RHS, मतलब देखो, always you have to move from reactant side to product side. तो अगर आप reactant to product side जा रहे हो and your oxidation is number is moving forward on the number line, you're moving from minus side to positive side, or from a less positive side to more positive side. Matlab, if you're moving forward in the number line, the process is oxidation because loss of electrons is taking place. If you are moving backward on the number line, reduction is taking place because gain of electrons is happening. When any species is going to gain electrons, it is either going to become less positive or it is going to go towards negative, because electron is a negatively charged species.
Similarly, अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, इट इज गोइंग टू गो टूवर्ड्स मोर पॉजिटिव साइड. See, देखो, the sulfur here is +4. This has gone to sulfur +6. Now +4 to +6, you are moving forward in the on the number line, है ना? So it is oxidation. Second case में देखो, chromium +6 and here chromium is +3. So +6 to +3, you are moving backwards on the number line. आप पीछे की तरफ जा रहे हो, यहाँ 6 का ही होगा, 6 से लेके आप कहाँ जा रहे हो, इस तरफ, 6 to +3. So this is reduction. Now, after identifying the processes of reduction and oxidation, if you remember, and you've done in previous classes also, there are something called as the oxidizing agents or the oxidants, reducing agents or the reductants. Okay. Now, what are oxidizing agents? Oxidizing agents are those molecules which oxidize the another molecule और खुद क्या हो जाते हैं, reduced. मतलब oxidizing agents, they themselves get reduced so that they can oxidize the another molecule. While reducing agents or reductants, they themselves get oxidized and in turn reduce the another species. So one thing which you can link here is, जो oxidizing agents होते हैं उनमें reduction होता है, reducing agents में क्या होता है, oxidation, है ना? Don't forget, agents, कोई किसी काम का एजेंट अगर होता है तो वो काम खुद के लिए नहीं करता, दूसरों के लिए करता है. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस्ड. रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड. सो इफ यू आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई रिडक्टेंट्स एंड ऑक्सीडेंट, ये देखो, नाउ हाइड्रोजन हियर इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. अब जो स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट. सो हाइड्रोजन हियर इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड क्लोरीन हियर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो आई कैन से ये जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के अंदर क्या कॉज कर रहा है, रिडक्शन. ये हाइड्रोजन की वजह से क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड और क्लोरीन की वजह से हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. Similarly, one more example to identify the reduction process, oxidation process, reductant and oxidant. And always remember, your reductant and oxidant identification के लिए आएगा तो आप इसको reactant side से ही ढूंढोगे. Product side पे there is no reductant oxidant. They are always on the कौन सा side, reactant side. तो simply देख लो, जिसका reduction हो रहा है that is the oxidizing agent, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, that is the reducing agent or the reductant. Okay. Some more examples for your oxidation state and number calculation. Thiosulfate ion. In thiosulfate ion, if I try to find out the oxidation number, here I'm getting it as +7, which is again not possible because sulfur has maximum of 6 valence electrons. So if I look at the structure here, there are 2 oxygens present as peroxides. So via structure, if I calculate, the oxidation state comes out to be +6. This molecule here is carbon suboxide. You can simply calculate by looking at the structure here. The oxidation number comes out to be 4/3, while the oxidation states are +2 and 0. Then next is how to
calculate the maximum and minimum state for any element. Okay. So I'll start from sulfur here. We very well know sulfur का atomic number is 16. It has how many valence electrons? 6. है ना? अब इधर आओ. If you are having 6 valence electrons, the maximum number of electrons which you can donate for bonding is how much? 6. 6 से ऊपर आप नहीं दे सकते हो, तो आपका मैक्सिमम स्टेट कितना हो जाता है? +6, है ना? ऐसे याद रख लो, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके आगे प्लस लगा दो, वो क्या हो जाएगा? मेरा मैक्सिमम स्टेट. ठीक है. और मिनिमम स्टेट निकालने के लिए जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको -8 कर दो, है ना? इफ यू आर हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स और 8 अगर आपको बनाना है, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हो? 2. 6 को 8 करने के लिए यू नीड टू एक्सेप्ट 2, एंड इफ यू आर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स तो आपका स्टेट क्या हो गया? नेगेटिव. सो यू कैन सिंपली डू इट एज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -8. तो 6 - 8 करोगे, क्या आ जाएगा? -2. सो मैक्सिमम स्टेट इज +6, minimum state is -2. Now this maximum and minimum state can be calculated for each and every element. And one thing to note here is, जो species हमेशा max state में होता है, कोई भी आपके molecule में, if the sulfur is present as +6 in the maximum state, that molecule can only and only act as oxidant. If sulfur is present in -2 state, that yeah, the minimum state, the molecule can only and only act as reductant, है ना? जबकि इनके बीच वाली states आप कोई भी ले लो, starting from +5 to -1, all these values, sulfur कभी भी इन states में present होगा, it can undergo reduction and oxidation both, है ना? Because ये center में है, ये intermediate states हैं, ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं. Similarly for nitrogen that has 5 valence electrons, maximum state क्या हो गया? +5, and minimum state is -3. 5 - 8 करो, क्या आ जाएगा? -3. और जो ये इनकी बीच वाली states कौन सी हो गई? +4 से लेके -2 तक, है ना? तो when nitrogen is present in +5, it can only and only act as oxidant. In minimum state, it can only and only act as reductant. Intermediate states, बीच वाली states, it can undergo both. यहाँ पे it can act as oxidant as well as reductant. So ये एक चीज आती है for identification. Again, some more examples to calculate your oxidation states and numbers. H2SO5 is Carros acid or peroxysulfuric acid, anyway you want. And we have the examples of hydrazine, osmium tetraoxide, barium peroxide, and H3PO2. That is phosphinic acid or hypophosphorus acid. Okay. Now one thing to note here is, जो मेरा maximum oxidation state जा सकता है, that is +8. है ना? Obviously valence shell में you cannot have more than 8 valence electrons, right? So the maximum oxidation state here is +8. That can be achieved by any atom in fact. 8 से ऊपर state कभी नहीं जाएगा. अच्छा, ये कार्बन वाले हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अगर हमें कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल इथेनोइक एसिड, अब इसमें मैं अगर x करके निकालती हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, दैट कम्स आउट टू बी 0. बट इफ आई लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ CH3COOH, तो मेरा एक कार्बन आता है -3 और दूसरा कार्बन आता है +3, एंड ऑब्वियसली -3 एंड +3 आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और इनका एवरेज इज गोइंग टू बी 0. So your oxidation number can come out to be 0 or a fraction or a whole number. Oxidation states are always going to be whole numbers, excluding 0. 0 नहीं होगा, है ना? Oxidation state cannot be 0. Oxidation state is 0 only for elemental form. If an element is participating in bonding, तो उसका oxidation state कभी भी 0 नहीं होगा. Oxidation number can be 0, जैसे यहाँ पे it is happening,
because oxidation number is the average value. Average can come out to be 0.